random codes, pseudo random codes, and almanac and ephemeris और एक और चीज nav message clock corrections. दो तरीके के वो कोड्स रहते हैं, L1 एंड L2, अलग अलग फ्रीक्वेंसी। नहीं करेक्शन, कोड्स दो तरीके के नहीं है, मतलब हैं, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी दो तरीके की। L1 L2 are two carrier frequencies. Yes sir. Frequency sir 157. Okay Gautam, go ahead. 157.42 sir, something in there. 1575.4 or 5.42, yes sir. Yes, 1575.42. Okay. Yes sir. Yes sir. And the other one? The other one is 12.276. 1227.6 megahertz. These are the two carrier frequencies. What is the data transmitted? What are the data transmitted on these two frequencies? In L1 frequency, that is 1574.42 megahertz. That course acquisition code, precision code, and nav message are transmitted. In L2, that is 1227.6. Precision code and nav message are transmitted. Very good. These are the data transmitted. Just to understand, what is the use of these pseudo random codes? Okay, you can relax now. Okay. Let us catch hold of Prabjot. 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 नहीं बोल रहा प्रभजोत, पता नहीं नेटवर्क इशू है क्या। ओके मोदित। Yes sir. Okay. What is the use of pseudo random codes? क्या करते हैं उससे? Pseudo random codes is used for finding the satellite's range. Very good. Very good. The CA code is used by who? कौन use करते हैं CA code? CA is used by civilians sir. And also defense services. Both. Yes sir. B code is used by B code. Sir, P code is used by defense services. Very good. Why these two codes? What is the difference between the two codes? CA code में sir simplified position आती है and Implement या standard? Standard position. Standard position. And, CA code provides SPS, standard positioning service. P code provides what kind of service? Precise position, sir. Precise position service, PPS. So did we see the structure of CA code, the digital data, binary codes, speed transmission, ये सब देखा था हमने? नहीं देखा था. No sir. No. So we have come to this point where we understand what are the data transmitted by the satellites and on what carrier frequency. तो ये questions है जो अभी तक हमने पढ़ा, इसमें what are the segments of GPS system? It's a clear-cut question. So you should be able to write the three segments and the work function of the three segments. क्या क्या होती है उसमें, क्या काम होता है. Number 2 is what are the carrier frequency and what data is transmitted. That also you should have clear-cut understanding. जो आपको नोट्स भेजे गए हैं उसमें ये दोनों क्वेश्चन हैं और दोनों क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखना है, क्या लिखना है, वो भी है आपके पास. हमने क्लास में भी डिस्कस
अगला क्वेश्चन जो आता है जीपीएस में वो ये कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सीए कोड एंड पी कोड एंड नेविगेशन मैसेज. So now you should be able to explain what is the CA code. टाइमिंग एंड रेंजिंग के लिए होता है, बहुत अच्छी बात. अब वो आगे क्वेश्चन आएगा कि कैसे सीए कोड से रेंज निकलता है, वो दूसरा क्वेश्चन. बट अभी राइट नाउ ये चीज क्या है? व्हाट इज सीए कोड, व्हाट इज पी कोड, व्हाट इज नेविगेशन मैसेज, व्हाट आर द कंटेंट्स इन दैट. So to understand that, to understand the CA code, one thing we must understand how the data is transmitted in a digital format. How data is transmitted in a digital format. हम बात करते हैं कि डिजिटल ट्रांसमिशन है, डिजिटल रिकॉर्डिंग है, डिजिटल ऑडियो है, डिजिटल वीडियो है. ये डिजिटल क्या है? बज तो रहा है गाना, इसमें डिजिट कहाँ है? So what is this digital about? हम लोग ऑडियो वीडियो पे नहीं जाएंगे. We'll talk about the data. We'll go to the board to explain this first, the digital thing, so that it will be easier to understand the CA code and P code. 2 minutes for digital transmission. Let me set up the camera. Board पे जाएंगे. Board visible? Yes, sir. Okay. Suppose I have got something like A, B, C, D. सर बोर्ड विजिबल नहीं है. तो क्या विजिबल है? कुछ भी विजिबल नहीं है. आपकी स्क्रीन पे बस आपका नाम आ रहा है. ओके, वेट करो, आएगा. ओके सर. आ गया कि वेट कर रहे हैं? वेट ही कर रहा हूँ सर. ओके, लेट्स सी इफ यू रिसीव इट. आई मीन कभी कभार डेटा ट्रांसफर होने में दिक्कत. एक बार बंद करके ओपन करो, फिर से लॉगिन करो. ठीक है विपुल भाई. अब विजिबल है सर. अब सब आ गया. ओके. यस So सर. now let us say we have to transmit ABCD on the VHF frequencies. जैसा हम there is something called modulation, आपको शायद सुना होगा. FM बोलते हैं हम तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, AM बोलते हैं तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है. होता क्या है मॉड्यूलेशन में कि we are there is a carrier frequency और इसमें मैं एक ऑडियो सिग्नल, लो फ्रीक्वेंसी ऑडियो सिग्नल मैं इसमें डालता हूं. इनको जब हम मिक्स करेंगे बाय मॉड्यूलेशन तो ये दोनों मिक्सअप होकर के एक नया फ्रीक्वेंसी बनता है, जिसमें या तो ऐसा हो जाएगा जिसमें कैरियर फ्रीक्वेंसी तो है लेकिन इसका फ्लक्चुएशन जो है इट इज हैपनिंग एज पर दिस. सो ये कैरियर फ्रीक्वेंसी भी है और साथ में इसका ये जो फ्लक्चुएशन हो रहा है एम्पलीट्यूड का वो इस तरीके से हो रहा है, तो इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. दूसरा तरीके का मॉड्यूलेशन अगर होगा तो मान लीजिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, तो ये फ्रीक्वेंसी जो है ये तो रहेगी लेकिन इसके चलते फ्रीक्वेंसी चेंज होगा फिर बढ़ेगा. तो if the frequency is increasing then reducing, then increasing then reducing. So this is relating to this, this is relating to this, this is relating to this, this is relating to this. जहां पे एम्पलीट्यूड बढ़ता है वहां फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, जहां एम्पलीट्यूड कम होता है वहां पे फ्रीक्वेंसी घट जाती है. So these are different types of modulation.
तो एक तो हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन देखा है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन देखा. देयर इज समथिंग कॉल्ड फेज मॉड्यूलेशन ऑल्सो, अनदर टाइप, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. तो मान लो कि मेरे पास एक कैरियर फ्रीक्वेंसी है, इसको हमने मॉड्यूलेशन किया एक कैरियर सिग्नल से. अगर हमने यूं किया कि यहां मॉड्यूलेशन हो गई, फिर छोड़ दिया, मॉड्यूलेशन नहीं हुई, फिर हमने मॉड्यूलेशन किया, फिर छोड़ दिया, मतलब यहाँ पे मॉड्यूलेशन नहीं थी, यहाँ पे मॉड्यूलेशन हुई, यहाँ नहीं हुई, यहाँ पे हुई, यहाँ नहीं हुई. तो ये दो स्टेट में मॉड्यूलेशन दिख रहा है कि नहीं? ये जो आउटपुट है वो दो कंडीशन में दिख रहा है कि नहीं? या तो है, मतलब या तो मॉड्यूलेशन नहीं है, या मॉड्यूलेशन है, मॉड्यूलेशन नहीं है, मॉड्यूलेशन है. ये दो कंडीशन में मॉड्यूलेशन दिख रहा है या नहीं? यस. सर एक बार और. ओके सर एक बार और. ओके गुड, नो प्रॉब्लम. ओके, इसको शॉर्ट करते हैं. ये मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट आप जीएमडीएसएस में और अच्छे से पढ़ेंगे. लेट अस अंडरस्टैंड इट दिस वे. व्हेन वी राइट ए, तो ए कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू कंडीशंस. मान लीजिए कि हमारा जो मॉड्यूलेशन है वो एक बार होता है, एक बार नहीं होता है. यहां से यहां नहीं हो रहा है, फिर यहां से यहां हो रहा है. तो मॉड्यूलेशन के दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो है, या तो है या नहीं है. दिस इज रेफर्ड टू एज 0 and 1, 0 and 1. तो हम जो ट्रांसमिशन करते हैं, कैरियर फ्रीक्वेंसी की ट्रांसमिशन करते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन दो ही स्टेट में होता है, या तो मॉड्यूलेशन होती है या नहीं. तो उस दो स्टेट को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं 0 and 1 से. जो हमारे ट्रांसमिशन है, उस ट्रांसमिशन में हम या तो मान लो मैं दो साउंड कर रहा हूं, आई एम मेकिंग टू साउंड्स, टू डिफरेंट साउंड्स. तो is are you listening to two different kind of sounds? Yes, sir. Let us understand, let us think that one sound is 0, other sound is 1. So if I say dot tit dot tit 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 dot tit dot tit, are you seeing that there is a combination of 0 and 1? No, sir. Combination is like So Omkar. when I'm transmitting, when you are hearing two sounds, you can recognize कि अच्छा ये वाला sound 0, ये वाला sound 1, ये वाला sound 1. So like that, the transmission is happening in two states, और उसको हम represent करते हैं 0 and 1 से. तो A can be represented by a combination of 0 1 0 1 1 1 0 0. कितने हो गए? 4 4 8. तो 8 के कॉम्बिनेशन को A बोलते हैं. अगर B होगा तो उसको दूसरे कॉम्बिनेशन से हम रिप्रेजेंट करेंगे, C को दूसरे से, वगैरह वगैरह. सो डिजिटल कम्युनिकेशन बस इतना ही है, इससे ज्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे. ये डेटा इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी कोड्स. बाइनरी मतलब दो, पेयर. तो पेयर में क्या है? 0 1 0 1 0 1. इन्हीं दो के बीच में कोड्स होती है. सर ये ए एंड बी सेम नहीं हो सकते? कम अगेन. आपने ए एंड बी में डिफरेंशिएशन डाल दी ना, राइट, कि डिफरेंट कोड्स आ रहे हैं, डिफरेंट जैसे 0 1 0 1, इसमें भी 0 1 0 1 चेंज हो रहा है कॉम्बिनेशन, राइट? या बट सर ये सेम नहीं हो सकते ए एंड बी? अच्छा ओके, मान लो मैंने लिखा ए, मैंने लिखा बी, मैंने लिखा सी, मैंने लिखा डी. ये एबीसीडी देख रहे हो कि सेम चीज देख रहे हो? Same सेम चीज दिख रही है.
अगर मैं बोलूं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो मुझको उल्लू बोलोगे कि नहीं? तुम नहीं सर, बोल सकते हो। आप बोल सकते हो। कॉमन सेंस क्या कहता है कि अगर दो चीज अलग अलग है तो अलग रिप्रेजेंट करना चाहिए कि नहीं? यस सर। यस सर। तो सिंपल सी बात है, अगर ए का कॉम्बिनेशन ये है तो बी का कुछ दूसरा कॉम्बिनेशन होगा कि नहीं? यस सर। अगर वही वाला कॉम्बिनेशन होगा तो वो तो ए था। मैं हमेशा जब देखूंगा तो यही समझूंगा ना। यस। बट सर चाहे कॉम्बिनेशन सेम हो बट टाइम डिफरेंस भी तो होगा ना सर। तो टाइम डिफरेंस टाइम डिफरेंस क्या का होगा? सर एक टाइम पे एक फ्रीक्वेंसी जा रही है सर, एक कॉम्बिनेशन निकली। देखिए ना, फ्रीक्वेंसी तो 1575.42 है, उसी से मुझको बनाना है ना दो कंडीशन। ओके सर, ठीक है ठीक है। फ्रीक्वेंसी तो एक ही है, उसी में मुझको बताना है। जो मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज तो एक ही है, मैं तो एक ही हूँ। इसी में मैं डॉट 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 अलग अलग साउंड्स बोलता हूँ, और यही दो साउंड्स मैं बात कर सकता हूँ। मैं इससे ज्यादा कुछ आता नहीं मुझको। क्या कहते हो? ठीक है सर, समझ गया मैं, सही है। So each of the characters are transmitted as a separate combination of 0 and 1. This digital communication is used in all places. जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, जो मैं बोल रहा हूँ, अब ये getting converted into digital signal transmitted over internet, coming to your devices, and you are listening to me. My sound converted into digital format, my video converted into digital format in the form of two kinds of signal, this and that. एक कंडीशन, दूसरा कंडीशन। एक कंडीशन को 0 मान लिया, एक को 1 मान लिया, एक को ऑन मान लिया, एक को ऑफ मान लिया। डीएससी, जहाज में डीएससी रिसीव करते हैं, वो भी डिजिटल कम्युनिकेशन। सैटसी से आप मैसेज भेजते हैं, वो भी डिजिटल कम्युनिकेशन। नावटेक्स से आप मैसेज रिसीव करते हैं, वो भी। ईजीसी से आप वेदर रिपोर्ट रिसीव करते हैं, वो भी डिजिटल कम्युनिकेशन। All kinds of things that you are using, most of the things are now digital. So, having understood that, what is digital communication? The CA code, we are now talking about what is CA code and what do we know about the CA code. The CA code is a digital transmission, digital code transmitted in the form of 0 and 1, and they are called chips. So the CA code is actually a code which is digital in nature, and it is transmitted in the form of 0 and 1 binary codes. Basically binary code मतलब दो, called chips. ये थोड़ा सा समझने का चीज होगा, या तो समझने के लिए अगर कोशिश करनी है तो मैं भी कोशिश करूंगा, और नहीं बोलोगे कि सर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, बस बता दीजिए, उतना हम रिपीट कर लेंगे, याद कर लेंगे। तो यू टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, लेट अस सी हाउ यू फील अबाउट दिस। समझाओ सर। हाँ बोलो, बता दीजिए सर। कोशिश बता करते हैं, दीजिए। कोशिश करते हैं, देखेंगे देखेंगे। When we transmit 0 and 1, 0 and 1, and 0, 0, 1, 1, whatever this codes, तो एक तो ये बात आएगी कि व्हाट इज द स्पीड, ट्रांसमिशन की स्पीड कितनी है, हाउ मेनी zeros and ones am I receiving in 1 second। तो आप अपने इंटरनेट का स्पीड बोलते हैं कि स्लो है, नहीं मेरा स्पीड तो बहुत फास्ट है। व्हाट इज दैट? वी टॉक अबाउट लाइक 1 Gbps। So what is the meaning of 1 Gbps, or you say 40 Mbps? ये हमेशा आप लोग यूज करते हैं।
So what is this? It is basically the number of zeros and one that is being transmitted, or number of 0 and 1 transmitted. So 40 मेगा मतलब 40 into 10 to the power 6. इतने zeros and ones, ये कितना है? 1 लाख, मतलब 40 लाख 0 and 1 ट्रांसमिट होगा 1 सेकंड में. इतने bits per second, each one is a bit. This is how much? 1 Gbps is 1 into 10 to the power 9 bits per second. So we always talk about digital transmission in the form of speed of transmission, at what speed we are transmitting. How many zeros and one? If less number of zeros and 1 second, slow speed. If it is more, we say high speed. So this one is transmitted at the rate of 1.023 Mbps. So what did we have? CA code is a digital code transmitted in the form of 0 and 1 binary codes, and they are called chips, and transmission speed is so much. If you want to understand what we are writing, you know what is the speed of the electromagnetic waves? What is the speed at which the electromagnetic waves travel? I am asking. At this point, you should know the speed of light. With basic things. 3 into 10 to the power 8, sir. 3 into 10 to the power 8 क्या? किलो? Meter per second. हाँ, तो ये बताओ ना, बिना यूनिट के कंप्लीट कैसे होगा? वेरी गुड. सो 3 into 10 to the power 8 meter per second. This is the speed. And here it is about 1 lakh of bits. मतलब जब हमने यहाँ से शुरू किया और ये करते करते 1.023 मेगाबिट्स ट्रांसमिट हो गए यहाँ से यहाँ तक, तो इतने डिस्टेंस कितनी कवर हो गई होगी? 1 सेकंड में इतने ट्रांसमिट हुए. मैंने बोला यहाँ से डॉट डॉट टी पे खत्म हो रहा है, डी पे शुरू हुआ था. तो आप जो सुन रहे हैं डी पहले सुन रहे हैं, डॉट, और टी लास्ट में सुन रहे हैं डॉट. तो ये 1 सेकंड में डी कितना दूर आगे निकल गया होगा जब ये खत्म हो रही होगी? We are talking about radio wave transmission. 1 सेकंड में इतने बिट्स ट्रांसमिट होते हैं या नहीं? Yes, sir. और 1 सेकंड में इतना दूर जाता है या नहीं? Yes, sir. That means ये सारे जो बिट्स हैं, how many bits? How many bits? 1 into 1.023 into 10 to the power 6 bits. यहां से यहां तक इतने बिट्स हैं, और 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस भी कवर हो चुका है, which is 3 into 10 to the power 8 meters. 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर हुआ और इतने बिट्स ट्रांसमिट हुए. तो कैन यू टेल मी कि एक बिट को ट्रांसमिट करने में कितना टाइम लगा? In 1 second, so many bits. For 1 bit, how much of time? Sir, 1 by 1.023. 1 millisecond. Come again? 1 by 1.023 into 10 to the power 6. Okay, very good. That means 10 to the power 6 नीचे है तो ऊपर चला गया. You said Yes, what sir. you said is right. Yes, sir. Yes, sir. Correct. तो 1 सेकंड में, sorry, 1.023 into 10 to the power 6 bits in 1 second. So 1 bit
will be this divided by 1.023 into 10 to the power 6. अगर हम इसको 1 ही मान ले तो it is simply 10 to the power minus 6. Correct or not? एक बिट के लिए इतना टाइम होगा. Yes, sir. So this is 10 to the power minus 6 is microsecond. Very good. So then we talk about the chip length. Next point is chip length. We have already seen that chip length is how much time? 1 microsecond. Understood? Why it is 1 microsecond chip length? Yes, sir. उसमें एक अपना कोड जाएगा. Yes. 1 सेकंड में 10 to the power 6 हुए थे, इसलिए एक को ट्रांसमिट करने में 1 by so much. So 1 by so much is this. Micro means 10 to the power minus 6. We also have seen that in 1 second, this 10 to the power 6 bits were transmitted, and the distance covered was 3 into 10 to the power 8 meters. So how much of distance will be covered by one chip? सर क्वेश्चन रिपीट करना. Okay. There are 10 to the power megabits है ना, इतने bits are transmitted in 1 second. यहां से यहां तक ट्रांसमिट होते हैं 1 सेकंड में, और उस 1 सेकंड में डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज दिस. So how much of distance will be traveled by this one bit? Sir, 3 into 10 to the power 14. 10 to the power 14 कैसे? हमने कहा Sir, 300 meters. Listen to me. 10 to the power 6 bits are transmitted in 1 second. So 1 bit is 10 to the power minus 6 seconds. Correct? जो पहले लिखा हमने. Yes, sir. Yes, sir. तो distance is equal to speed into time. Correct or not? Yes, sir. Yes, So sir. speed was 3 into 10 to the power 8 meter per second. And Yes. the time for one bit is this much. So 10 to the power minus 6 or not. 300, sir. 300. So it's 300. Correct? Yes, sir. Okay. So it is not exactly 300. जो हम लोग स्पीड लेते हैं उसमें थोड़ा कम ज्यादा होता है. एटमॉस्फेयर से चलता है तो थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी होता है. So this in terms of distance relates to 293 meters. One chip length in terms of time is 1 second or 1 microsecond, which when converted into distance is 293 meters. So you must now know that 0 and 1, these are the bricks, building blocks, और इसी को मिला करके हम एक कोड बनाते होंगे. अगर सीए कोड की बात कर रहे हैं तो पूरा कोड बनाने में there will be certain number of this required or not? अगर मैंने अभी जो एग्जांपल दिया था ए लिखने के लिए मुझको 00110011 ये सर्टेन नंबर ऑफ बिट्स चाहिए होते हैं कि नहीं एक कोड बनाने के लिए, ए बनाने के लिए? Yes, sir. Good, sir. भारी हो रहा है थोड़ा? इट गेटिंग हैवी? Yes, sir. ओके. एक बार होगा, अगली बार जब बात करेंगे, जब पी कोड पे आएंगे तो दिस विल बिकम मच इजियर. बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिए, बट जस्ट कीप लिसनिंग. So CA code बनाने के लिए there are certain number of bits will be required. So 1023 bits or chips make one
complete CA code. When a satellite is transmitting the CA code, it is like 1011111011, 10111011, 10111011. So it keeps on repeating. One code keeps on repeating. रिपीट करेगा मतलब शुरुआत होगी और खत्म होगी. तो शुरुआत और खत्म होने के बीच में कितने बिट्स ट्रांसमिट हो जाएंगे, कितने चिप्स ट्रांसमिट होंगे? There will be 00111100. ऐसा 1023 chips will be required. That is one CA code. Understood? How many chips are required to make a code? मुझको एक दीवार बनानी है, कितनी ईंटें लगेंगी? सिंपल सा क्वेश्चन. दीवार के साइज के अकॉर्डिंग सर. एक दीवार के साइज के अकॉर्डिंग. तो यहाँ सीए कोड का एक दीवार है. सीए कोड इज अ दीवार और उसको बनाने में मुझको 0 and 1 लगते हैं. यहाँ डिफाइंड है कि कितने लगेंगे 0 and 1. सो हाउ मेनी 0 and 1s? बेसिकली चिप्स. 1023 सर. to make one code? 1023 सर. Just like that. और वो हर चिप जो था 1023 चिप्स, हर चिप कितने देर का था? How much time for one chip? 1 microsecond सर. Very good. How much distance? 293 300. सर. Very good. तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे कोड का लेंथ भी निकल जाएगा, टाइम में भी और डिस्टेंस में भी. 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे. इज इट नॉट? यस सर. एक इतना 1 माइक्रोसेकंड का था तो 1023 उतना मल्टीप्लाइड बाय 1023 हो जाएगा. सो यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट फ्रॉम हियर. नेक्स्ट, CA कोड लेंथ. CA कोड जैसे ये चिप का लेंथ था 1 माइक्रोसेकंड, तो मल्टीप्लाइड बाय 1023 कर देंगे तो इतने कोड है इसमें. तो दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ टाइम. कितने मीटर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे? दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस. सो कितना होगा? जनरली द वैल्यूज आर टेकन एज, थोड़ा प्लस माइनस भी है तो उसको छोड़ देते हैं. इट इज 1 milliseconds. CA code length is 1 millisecond. 1 millisecond is 1 microsecond into 1000. So 10 to the power minus 3. This is 10 to the power minus 3 milli. 1 by 1000 is milli. In terms of distance, this was 293 meters. When multiplied by this, 293 into this, कितना होगा बताइए जरा? एक बिट 293 मीटर का, तो इतने बिट कितने मीटर का? कैलकुलेट करके बताइए. यस. somewhat around 3 lakhs. 299739. Okay, so approximately we can say 300 kilometers, correct? And what you have got 299 point something something, that is actually correct. So this is the structure of the CA code. The information that we are talking about is that it is a digital code transmitted on which frequency? CA code? CA code is 1575.42. वेरी गुड. L1 बोल सकते हैं सिंपली हम लोग. L1 उस फ्रीक्वेंसी का नाम हमने L1 दिया था, तो L1 पे ये ट्रांसमिट होता है. अगर ट्रांसमिट हो रहा है, इंफॉर्मेशन इज बीइंग पुट ऑन टू द कैरियर फ्रीक्वेंसी बाय व्हाट?
procedure, what by what method? Modulation. Very good, modulation. So इसमें we are using phase modulation. So now we'll share the screen. We'll talk about this on the screen. Simplified form में आप black and white में देखेंगे कि CA code के बारे में क्या लिखना है. And see if you now study, when you read it, do you understand it or not? Based on the discussion that we have had, whether we can make out what we are reading or not. अब जो इतनी मेहनत करी हमने यहाँ पे, तो सारा कुछ ऐसे ऐसे पार नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा भीतर भी आना चाहिए. वैसे एक चीज और ऐड कर दो इसमें कि there are 24 active satellites. हर सैटेलाइट का कोड अलग होता है. Every satellite is having separate, different, unique code. हर किसी का कोड अलग होगा, तो I can use that for identifying the satellite or not. अगर मेरा आईडी है 1, तुम्हारा आईडी है 2, उसका आईडी है 3, तो जैसे ही 3 बोलेंगे तो हम समझ जाएंगे ना, हाँ वो है. 1 बोलेंगे तो हाँ ये है. 6 बोलेंगे तो वो है. So satellites can be identified with this CA code. Also, remember we started off with this. This is pseudo random code and it is used for timing and ranging. इसी कोड को यूज करते हैं हम सैटेलाइट को पहचानने के लिए और फिर उसका रेंज निकालने के लिए. आगे देखेंगे कैसे. आई एम शेयरिंग द स्क्रीन. देयर यू विल सी लिटिल बिट the same information being discussed on screen. Allow me to share the screen. Let me find out the file. Just 1 second. All right, so ये हमने देखा था. ये हमारी कल की क्लास थी. नाउ नेविगेशन सिस्टम में हम सीए कोड, पी कोड और नेविगेशन मैसेज के बारे में बात करेंगे. जस्ट गो थ्रू दिस and see now if it is sounding familiar, what you are reading is looking familiar to you or not. Any questions you may please ask. Paragraph 1 clear, paragraph 2 clear or not? सही है. प्रिसिशन कोड्स भी 0 and 1 के फॉर्म में होते हैं. सब कुछ डिजिटल है रे भाई, सब कुछ डिजिटल है. नेविगेशन मैसेज भी डिजिटल, प्रिसिशन कोड भी डिजिटल, सीए कोड भी डिजिटल. लेकिन डिजिट से हम अलग अलग बात करते हैं ना. डिजिटल सॉन्ग में हम एक गाना सुनते हैं तो दूसरा भी डिजिटल में सुन सकते हैं ना. तो डिजिटल फॉर्मेट में अलग अलग कोड तो मैं बना ही सकता हूँ. आई हैव मेड सीए कोड एक दूसरे तरीके का, दूसरा कोड दूसरे तरीके का. यूजिंग सेम 0 and 1 I can write A, same 0 and 1 different combination B and C and D. So these two paragraphs which you are reading, is it making sense? नहीं कोई जवाब आया.
नहीं क्लियर हुआ? ओके, हम आगे चलते हैं और फिर रिलेट करेंगे इस चीज को. मे बी वी कैन कम बैक टू दिस स्लाइड वंस अगेन. Okay, sir. The CA code provides SPS. The P code provides PPS. अभी मॉर्निंग में भी बात करी, कल भी बात करा था हमने, परसों में बात किया. Is this okay? Yes, sir. Good. So here what we are seeing is the carrier frequency. On these carrier frequencies, there are the pseudo random codes and satellite orbital information, which is navigation message. वो navigation message में आता है. Ephemeris and almanac. The method of superimposing the information onto carrier frequency. इसमें मान लीजिए CA कोड की बात कर रहे हैं, तो इस CA कोड को हमको इस कैरियर फ्रीक्वेंसी पे डालना होगा या नहीं? यस, डालना होगा. प्रोसेस क्या होगी? मॉड्यूलेशन. व्हाट काइंड ऑफ मॉड्यूलेशन? फेज मॉड्यूलेशन. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? नहीं बोल रहे. Yes, sir. So what data is transmitted on L1 and L2? This we have also yesterday seen it. Yes, sir. So simple line में, simple language में हमें ये लिखना है. And the question is coming, what do you mean by, what do you understand by carrier frequency and the data transmitted on them? Then you start talking about that the satellites, the GPS satellites transmit pseudo random codes and navigation message on two carrier frequencies named L1 and L2. L1 is so much frequency, L2 is so much frequency. The data carried on L1 is this. The data carried on L2 is this. L1 पे CA code, B code and navigation message. L2 पे only P code and navigation message. In discussion, we have already understood that CA code and P code are used for ranging of the satellites. कितना दूर है मेरे से? Remember once again, GPS रिसीवर को क्या इनपुट चाहिए पोजीशन फिक्स निकालने के लिए? Distance and position, sir. Distance and position of the satellite. Very good. तो सूडो रैंडम कोड, CA कोड, P कोड से रेंज निकलती है, नेविगेशन मैसेज से लोकेशन पता चलता है. सिंपल एज सर क्वेश्चन था बोलो. कि ये जो L1 L2 की जैसे फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है, तो हाँ. इससे आपके जो कोड्स हैं उस पे उसकी स्पीड या फिर किसी और उस पे तो असर नहीं पड़ता ना? Negative. All electromagnetic waves travel at the same constant speed. The speed of electromagnetic wave is fixed at c,
which is 3 into 10 to the power 8 meter per second. But when they travel through the medium, when it is traveling through the medium, then their behavior changes little bit. स्पीड तो वही होती है, लेकिन थोड़ा सा चेंज आता है हाउ इट इज ट्रैवलिंग थ्रू द स्पेस. अगर वैक्यूम में बात करें तो सब एक स्पीड से चलेंगे, लेकिन किसी मीडियम में घुसती हैं ये, जैसे एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, तो दोनों का बिहेवियर बदल जाता है. इसीलिए हम VHF यूज करते हैं तो शॉर्ट रेंज पे बात होती है. MF यूज करते हैं तो 300-400 किलोमीटर हो जाता है. HF यूज करते हैं तो 800-1000 किलोमीटर हो जाता है, 1500 किलोमीटर हो जाता है. तो इन an atmosphere, when these waves are traveling, they behave differently. If it is in vacuum, all these waves are traveling at the same speed. आपकी सनलाइट आती है, सनलाइट को क्या किस कलर में देखते हो आप? सनलाइट जो आप नॉर्मल देखते हो खुले आंख से, what we call that sunlight? Do we call it white light? सनलाइट को सर? हाँ, सनलाइट को व्हाइट लाइट ही बोलते हैं ना. यस सर. लेकिन यही व्हाइट लाइट जब प्रिज्म से पास होती है तो 7 कलर में बढ़ जाता है या नहीं? यस सर. So when the light Yes, is coming like this, जब उसको हम प्रिज्म में डालते हैं तो ये 7 कलर में बढ़ जाता है या नहीं? अलग अलग कलर में हो जाता है, 7 कलर्स. Yes, sir. We've sure. Why? Because it is traveling through this medium. यहाँ चेंज ऑफ मीडियम हुआ तो सारे फ्रीक्वेंसीज की बिहेवियर बदल गई, सबका स्पीड बदल गया. तो ऐसा होता है हमारे अर्थ के केस में भी. अर्थ यहाँ पे नीचे में है, ऊपर में एटमॉस्फेयर है, तो एक की स्पीड यहाँ पे जो होगी, रिफ्रैक्शन वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं, वो चेंज होता है कुछ ऐसा. दूसरी फ्रीक्वेंसी होगी वो ज्यादा बेंड हो जाएगी. स्पेस में तो बराबर आ रहा था, यहाँ से सीधा आ रहा था सब बराबर, लेकिन जब एटमॉस्फेयर में आएगा तो उसका बिहेवियर बदल जाएगा. इनफैक्ट इसी बदले हुए बिहेवियर को यूज करते हैं हम टू फाइंड आउट कि रेंज का एरर कितना हो गया. अभी चलो जब बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पे एक एरर डिस्कस कर लेते हैं. सपोज दिस इज अर्थ, द सैटेलाइट इज हियर, it is transmitting signal like this. There are 2 frequencies being transmitted from the satellite, but there is atmosphere of the earth, different layers of the earth. As the signals are starting from the satellite, तो ये behave करता है कुछ ऐसा. रिसीवर अगर यहाँ पे है अर्थ पे, तो लाइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव L1 फॉर एग्जांपल, which is coming from the satellite and reaching the receiver is like this. The other frequency will travel like this and reach here. So are we going to get the range proper? अगर हम इसको रिकॉर्ड करें तो are we going to get the range properly, or the range is straight line from here to here? The red, green is right, or the orange line is right? Correct range. So orange is right. That means this is going to cause error in the range or not? This refraction. Yes sir. This is the source of error of the GPS position fix. जो हम पोजीशन निकालते हैं वो एक्यूरेट नहीं होती, थोड़ा प्लस माइनस हो जाता है. क्यों हो जाता है? क्योंकि ये रिफ्रैक्शन हो रहा है, वेव प्रोपगेशन
at different speed in this medium. That is why we have approximate position, not 100% accurate position on the earth. This is called atmospheric delay. ये लेट हो गया या नहीं? जो सिग्नल आ रहे हैं रेड एंड ग्रीन में, वो कहीं और घूम घूम के आ रहा है तो लेट आएगा कि नहीं मेरे पास? Yes, sir. So that is called atmospheric delay. You just studied one error of the GPS. What is that error known as? Propagation error. Atmospheric delay. All right, so we have another class before lunch, so we'll stop it here. Now it is time for you to take the break. Thank you, sir. Yes, so we'll meet again after the break. Thank you, sir. देखो ऐसा है Thank you, ना, sir. ऐसा है कि मैं इसके बारे में कुछ कर नहीं सकता है। एक तो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, अगर मैं सिर्फ बोर्ड पे दिखा दूं कि नोट कर लो तो वो मैं कर सकता हूँ, लेकिन फिर वो पढ़ाया क्या मैंने? 4 लाइनें लिखनी है, वो तो मैं लिखवा दे सकता हूँ, आपको बोर्ड पे दिखा दे सकता हूँ, लेकिन चीज लिख क्या रहे, ये चीज है क्या, समझ में नहीं आएगी तो कैसे बात हो? इसीलिए थोड़ा आपको भी दबाव डाल रहा हूं मैं कि थोड़ा दिमाग लगाओ, एक बार समझ जाओगे तो आगे के लिए इजी होगा। ठीक है, चलो नहीं सर, ठीक है, नहीं सर, अच्छे से समझ आ रहा है सर। गुड। अगर दिस इज द ये जज्बा है तो बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, वेरी थैंक गुड। यू सर। चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद। Thank you, Signing off. sir. Yeah. Thank you.